H1 receptor antagonist or H1 blockers or antihistaminics. H1 blockers are of two types, first generation and second generation. First generation example diphenhydramine, dimenhydrinate, promethazine, cynarizine, cyclizine, meclizine, hydroxyzine, phenyramine, chlorphenyramine, cyproheptadine, clemastine, and triprolidine. So first generation diphenhydramine, dimenhydrinate, promethazine, and hydroxyzine. These are highly sedative. Others are cynarizine, cyclizine, meclizine, phenyramine. Phenyramine is moderately sedative. Chlorphenyramine is mildly sedative. Then we have cyproheptadine, clemastine, triprolidine. Second generation agents cetirizine, levocetirizine, loratadine, desloratadine, fexofenadine, ibastine, rupatadine, azilastin, mesolastin, cetirizine, levocetirizine, loratadine, desloratadine, fexofenadine, ibastine, rupatadine, azilastin, mesolastin. Mechanism of action of H1 blockers. H1 antihistaminics antagonize the effect of histamine by competitively blocking the H1 receptors. That is, H1 antihistaminics are the competitive antagonist of histamine. H1 receptors पे histamine are the agonist and antihistaminics are the competitive antagonist. H1 receptors पे histamines are the agonist, antihistaminics are the competitive antagonist. First generation H1 blockers. H1 blockers cause CNS depression, sedation, and drowsiness. Certain antihistamines have anti-emetic, local anesthetic and anti-पार्किंसोनियन इफ़ेक्ट्स. ठीक है, इसलिए इसको हम पार्किंसोनिज्म में यूज़ करते हैं. एज अ एंटी इमेटिक भी यूज़ करते हैं. दे हैव एंटी एलर्जिक एक्शंस, तो इनको हम कुछ एलर्जीज़ में यूज़ करते हैं. मोस्ट ऑफ द मैनिफेस्टेशंस ऑफ टाइप 1 रिएक्शन आर सप्रेस्ड. दे ऑल्सो हैव एंटी कोलिनर्जिक एक्शन, कॉज ड्राइनेस ऑफ माउथ, ब्लरिंग ऑफ विजन, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन. ये एक डिसएडवांटेज है. तो जो सेकेंड जनरेशन होता है ना, उस वो सी एन एस डिप्रेशन प्रोड्यूस नहीं करते हैं. वो एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज़ नहीं होता उनके पास, एंटी इमेटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं होता उनके पास. H1 antihistaminics are well absorbed after oral and parenteral administration. ओरल या पैरेंट्रली दे सकते हैं. वेल absorbed and distributed widely throughout the body, metabolized extensively and in liver, excreted in urine. Uses of H1 antihistaminics: allergic diseases, common cold, pre-anesthetic medication. PAC, pre-anesthetic medication, allergic diseases and common cold. As anti-emetics, Parkinsonism, to control mild blood transfusion and saline infusion reactions, and as adjunct in anaphylaxis. Okay. And they are effective in controlling vertigo in Meniere's disease and other type of vertigo. The antihistaminic and anticholinergic action are used in vertigo, then sedative and hypnotic. They are used to induce sleep, especially in children with minor सर्जिकल प्रोसीजर्स. तो उनका प्रॉपर्टीज़ क्या क्या था कि सी एन एस, ड्राउजीनेस, सेडेशन कॉज करते हैं. दैट्स वाई दे आर यूज्ड एज अ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक. H1 antihistamines, example promethazine and diphenhydramine. They are used to induce sleep, especially in children during minor surgical procedures. H1 antihistaminics are used to induce sleep, especially in children during minor surgical procedures. So they are used as a sedative and hypnotic.
Cinnarizine, dimenhydrinate, meclizine are effective for controlling vertigo in Meniere's disease and other types of vertigo. Their antihistaminic and anticholinergic actions are used in this case. So एक sedation hypnotic sedative hypnotic हो गया, दूसरा vertigo. Then they are used to control mild blood transfusion and saline infusion reactions like chills and rigors. H1 blockers are used to control mild blood transfusion reaction and saline infusion reaction and as an adjunct to and as an adjunct in anaphylaxis. तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन सलाइन इन्फ्यूजन रिएक्शंस को कंट्रोल करता है एंड दे आर यूज्ड एज एन एडजंक्ट इन एनाफाइलैक्सिस. माइल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन सलाइन इन्फ्यूजन रिएक्शंस को कंट्रोल करता है एंड दे आर यूज्ड एज एन एडजंक्ट इन एनाफाइलैक्सिस. Parkinsonism, imbalance between dopamine and acetylcholine in the basal ganglia produces Parkinsonism. Promethazine, diphenhydramine and orphanadrine. Promethazine, diphenhydramine and orphanadrine. They are used to control tremors, rigidity and cyalluria of Parkinsonism due to their anticholinergic and sedative properties. Promethazine and diphenhydramine are useful in the treatment of idiopathic as well as drug-induced Parkinsonism. Okay. See, the mnemonic is PAC. P से दो P है, ठीक है. एक तो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, दूसरा पार्किंसोनिज्म. ए से भी दो है, एक एलर्जिक रिएक्शन और फिर एज एन एंटी इमिटिक. और सी से कॉमन कोल्ड, ठीक है. तो 5 हो गया पार्किंसोनिज्म, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, एलर्जिक रिएक्शंस, एंटी इमिटिक और कॉमन कोल्ड. इसके अलावा वर्टिगो को कंट्रोल करता है इन मीनियर्स डिजीज़ एंड इट इज़ यूज्ड एज अ स्लीप and it is used to induce sleep. As a sedative it is used. So PAC VS, V for vertigo, S for to induce sleep, and it is used to control mild blood transfusion reaction and saline infusion reaction and adjunct in anaphylaxis. Then as anti-emetic, promethazine, diphenhydramine, dimenhydrinate are useful for prophylaxis of motion sickness, to prevent motion sickness because of their anticholinergic action. They act probably on the vestibular apparatus of or cortex. Sedative effect also contributes to the beneficial effect. The drugs are useful in drug-induced and post-operative vomiting. मोशन सिकनेस में यूज़ होता है, ड्रग इंड्यूस्ड वोमिटिंग में पोस्ट ऑपरेटिव वोमिटिंग में. प्रोमेथाजन इन कॉम्बिनेशन विथ अदर एंटी एमेटिक इज यूज्ड टू कंट्रोल वोमिटिंग ड्यू टू कैंसर, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी. ठीक है, तो प्रोमेथाजन को कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं विथ अदर एंटी एमेटिक्स टू कंट्रोल द रेडिएशन थेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग एंड कैंसर कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग. ठीक है, तो वेस्टिबुलर अपरेटस में M और H1 रिसेप्टर्स होते हैं. वोमिटिंग सेंटर में भी M1 H1 रिसेप्टर्स होते हैं. मोशन होता है तो वेस्टिबुलर अपरेटस में M1 H1 से सेरिबेलम में जाता है सिग्नल और फिर वोमिटिंग सेंटर में जाता है सिग्नल. वहाँ पे भी M और H1 होता है. It is used as pre-anesthetic medication. Promethazine is used for its sedative and anticholinergic effects. Common cold में they provide symptomatic relief by sedative and anticholinergic action. Allergic diseases में they are used to prevent and treat symptoms of allergic reactions. For example, pruritus, urticaria, dermatitis, rhinitis, conjunctivitis, and angioedema of lips to these drugs. Allergic reactions like pruritus, urticaria, dermatitis, conjunctivitis, rhinitis, angioedema of lip. Common cold, pre-anesthetic medication as an anti-emetic. Parkinsonism, to control mild blood transfusion and saline infusion reaction. Adjunct in anaphylaxis, to control vertigo in Meniere's disease and as sedative and hypnotic.